Hi friends, I am Dr. Mayur Kulkarni, Dr. Mac, your radiology faculty on Marrow. There is a saying in Hindi, there is a शायरी in Hindi that says, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है. So you get into such a position of success that in the end it is you who have the ultimate choice. And I have one such achiever with me today who is in a position to choose his dream branch in his dream college because he has made it happen. I am very, very pleased, very, very delighted to welcome Dr. Sagar Lamba with me here in this particular Thank you. session. Dr. Sagar has got an excellent rank of rank 10 in the recently conducted NEET PG 2023 exam. Dr. Sagar, how are you feeling today? सर बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि ये मैंने विश्वास भी नहीं किया था. मैंने रिजल्ट भी अपना 10-12 बार चेक किया है और दूसरों से भी चेक करवाया अपने फ्रेंड से, फैमिली से. तो इट्स अनबिलीवेबल. Dr. Sagar, tell me a little bit about yourself. Where are you from? What college are you from? What batch are you from? Sir, I am basically from BSA Delhi, and I am from 2017 batch. This was my first attempt. Oh, so this was your first attempt. So you've cracked the mammoth of this exam, right? In your very first attempt, and you have got a Yes. rank of 10, right? How are your parents feeling, right? Sir, they are very proud of me because they were the most important part of my journey. उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हेल्प की है. मतलब कि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मतलब रात भर जागे है. मम्मी पापा सबने हेल्प की है बहुत. Of course, बेसिकली of course. मेरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ही हेल्प की है इस जर्नी में. Great, great, great. Dr. Sagar, we are trying to understand how you could achieve this amazing feat of getting this particular rank. The attempt is that the students who are now going to prepare for the upcoming exams could pick up from your strategies, could use your strategies and techniques and do better in their exam performance as well. So tell me, Dr. Sagar, Marrow was your primary source of preparation. Since when did you use this particular platform of Marrow? Sir, I basically bought plan B of the Marrow during my internship days, and basically I used Marrow for only question bank and GTs. Okay, okay. Uh, So what was your strategy of dealing with the question bank of Marrow, Dr. Sagar? सर बेसिकली सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चन बैंक मैंने किया है. मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक भी नहीं किया था. एंड बेसिकली कस्टम मॉड्यूल बेस्ट फीचर है मैरो की, क्योंकि उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से. जिस सब्जेक्ट में हम वीक है उसमें कर सकते हैं. ऑल सब्जेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं, तो वो बेस्ट था. और जीटी एनालिसिस भी बहुत अच्छा है मैरो का. उसमें हमें वीकेस्ट पता चल जाते हैं, तो हम जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो हम तैयार कर सकते हैं और वो अगले जीटी में वीकेस्ट नहीं होने चाहिए. बस मेरी ये स्ट्रेटेजी थी. So I'll come to the assessment of GT. What Dr. Sagar is telling us is that he has used question bank selectively. He has focused more on the previous year questions and then assessed Yes. the explanations of that. Dr. Sagar, आप previous year questions को जब deal करते थे, solve करते थे, उसके साथ उसका explanation पढ़ते थे, तो ये question bank के explanations में वो topic और उससे allied topics were very covered well. How did you find those Yes. explanations? सर एक्सप्लेनेशन में जो बोल्ड फॉन्ट में लिखी होती थी वही चीजें पढ़ पाता था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बड़ी होती थी बड़ी. और फिर उसमें स्कीमा एक चीज आई थी जिसमें प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है, तो उससे बड़ी हेल्प होती थी. फिर मैं उसी के वही टॉपिक्स के क्वेश्चन बैंक्स करता था. All right. So schema, how did you use schema? Were you acquainted with schema? Did you know how to use it? And how did you use it to your advantage, Dr. Sagar? सर बेसिकली स्कीमा से बस प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पता कर लिए थे कि जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली, और उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान दिया था जो मेरे वीकेस्ट थे उनमें से. Okay. Did you use bookmarks? आप bookmarks use करते थे? यस सर. जो भी रॉन्ग है या गेस की हुई है, चाहे करेक्ट भी हो गेस करेक्ट हो, वो बुकमार्क लास्ट के 2 दिन में वही उनकी रिविजन्स
ने बहुत हेल्प की है। So how was your number of bookmarks, Dr. Sagar? Was it a lot when you started and then it dropped down? Yes, sir. I used to decrease my bookmarks every week so that last में cluster ना हो जाए। How did you eliminate those bookmarks? How did you reduce your सर bookmarks? बेसिकली जो टॉपिक्स मतलब कि लगता था कि हाँ ये आ चुके हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस आ जाता था उनको फिर एलिमिनेट कर देता था। जिनमें जैसे फैक्चुअल है जो, उनको बुक मार्क दे रखता था। और जो वीक टॉपिक्स है जैसे कि मेरा एफएमटी एनाटॉमी बहुत वीक था, तो उनको मैं बुक मार्क के रखता था ताकि लास्ट दिन के लिए रिवाइज कर पाए। Right. So those topics which you felt you were confident about, which were based on concepts which you thought you could crack very easily, you remove the bookmarks from them, right? हाँ जी सर। And topics which you knew or you felt that you had to revise very close to the exam because they were volatile, difficult to remember, those bookmarks were retained, and then you use those bookmarks, right? Yes sir, absolutely. Right. So this is a very great strategy, students, because you often get overwhelmed by the number of bookmarks that you have placed right at the outset when you start preparing. But you'll realize that as you go ahead with your preparation, with your revisions, with your various tests, most of those bookmarks you'll be able to eliminate on your own. So eventually, in the end, you'll be left with just the basic essential number of bookmarks, and that will help you revise it. Dr. Sagar, custom modules, how did you use them to your advantage? सर बेसिकली जैसे कि जो भी सब्जेक्ट में कर रहा होता था, उसके मैं जैसे कि माइक्रो हो गया, उसके कस्टम मॉड्यूल में सिलेक्ट करके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 टैग्स होते थे, रिसेंट, नीट और एम्स, वो सिलेक्ट करके कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करता था। फिर जो उसमें भी रॉन्ग होते थे या स्किप करता था, वो जब तक मैं उस पे मतलब कि अच्छे से पढ़ ना लूँ एक्सप्लेनेशन, तब तक मैं उसको रिमूव नहीं करता था। All right. कस्टम Dr. मॉड्यूल Sagar, बेस्ट फीचर है। right. So, Dr. Sagar, when did you give your first grand test on Marrow? Sir, first grand test I gave last national NEET mock. मतलब Okay. And how did you perform in that test? sir very poor. I had 90 correct, I think, in that test. Okay. And this was before the last NEET, is it? Yes, sir. Last Okay. NEET. Okay. Acha, what was the most recent grand test that you give, which you So the appeared for? recent was the grand test 15 after the national NEET mock 2023. Okay. And how did you perform in this particular test? सर इसमें भी मेरी परफॉर्मेंस मॉक से कम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा लगा था। फिर लग रहा था कि पेपर अभी ही है, 1 हफ्ते बाद ही है, तब भी इतना मतलब कि डाउनफॉल हो रहा है बहुत। पर मतलब कि उम्मीद उससे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। So मतलब how कि did you जितने work मेरे on it then? सर बेसिकली मैंने वीकेस्ट सब्जेक्ट ही देखा, उसी को लास्ट 7 डेज़ में रिवाइज़ किया है। वीकेस्ट लास्ट 3 वीकेस्ट सब्जेक्ट्स को, उन्हीं को ही, जो मेरे एनाटॉमी, एफएमटी और माइक्रो थे। Okay. What rank did you have, Dr. Sagar, in the last grand test that you gave? सर 1 था 1500 आई थिंक। Okay. So friends, what Dr. Sagar is basically telling us here is that grand test or these mock tests are basically a tool for you to identify your weaknesses as close to the exam as possible, right? So, Dr. Sagar, after you give one such test, right? How do you look at that test? How do you assess your performance in the test? How do you get better with each and every test? What did you do after giving a test? सर बेसिकली जो एनालिसिस होता है उसमें पता चल जाता है कौन सा वीकेस्ट है, तो लास्ट 3 के वीकेस्ट देख के वही आगे मैं रिवाइज करने का सोचता हूँ। और बेसिकली जो रॉन्ग होते हैं या गेस्ड है उन पे और स्किप्ड में काम करता हूँ कि वो क्यों हुए रॉन्ग, और अगर फैक्चुअल थे तो क्या है, और अगर कंसेप्ट में दिक्कत है तो फिर उन्हीं के फिर टॉपिक्स को रिवाइज करना, वही अच्छा, करता ये हूँ। जीटी का एनालिटिक्स या फिर जीटी ग्राफ्स, डिड यू यूज दोस जीटी एनालिटिक्स यस एंड सर। हाउ?
सर बेसिकली जैसे जीटी एनालिसिस में पता चल जाता था कि जो जो मतलब टॉपर है उससे मतलब कि क्या कमी रह रही है हमारी प्रिपरेशन में उसके हिसाब से। तो वही है भी, उसमें सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता था। कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छी होती थी लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत गंदी होती थी, तो मेनली उन्हीं पे काम करना था। All right, all right. अच्छा, अभी का in this recent test you said you had a rank of 1500 something, right? Yes, And sir. how were your ranks throughout the year? Were these ranks constantly on an improving trend, or they used to be varied from test to test? What was the Sir, trend of the ranks? first of all it was improving, but then at last it was मतलब कि decreasing, मतलब कि my performance was decreasing in the GTs. But in national NEET mock I had rank 300 something. Okay. But the recent GT I had bad rank. That's why my confidence got low. But then you focused on what you had got wrong in that particular grand test, Yes, right? sir. Yes, sir. All right, all Only right, the topics that I have got wrong. all right, all right. Acha, Dr. Sagar, tell me, in this year of preparation, was there a time where you felt very low, you felt depressed, right? You felt कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, right? Did this kind of thought come to your mind, and how did you keep going? How did you motivate yourself? सर ऐसा तो बहुत बार हुआ है, पर मोटिवेशन ये आती थी कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ ही होता है। कि मतलब कि ये कोई वो नहीं है, ये सबके साथ ही होगा। और बेसिकली बस जो जो गलत हो रहा है उस पे काम करना है, ताकि नंबर ऑफ करेक्ट बढ़ते रहे। मतलब अपने आप से इम्प्रूव करना है, जो हम पहले थे उसी से इम्प्रूव करना है, बस यही था मेरा मोटिव। Right. Fantastic. And that is what you've actually done, right? In spite of getting these ranks in the test, in the very last test that you gave, right, instead of getting depressed and feeling low and down, right, down and out, right, rather you worked on your weaknesses, you worked on your weaker subjects, on your weaker topics, on your factual topics, and look at where we are today at rank 10, right, in the ultimate test, in the ultimate exam. So fantastic. Dr. Sagar, tell me, what are the few best features of the Marrow app as a platform that you would want to recommend to your juniors or your students who would be using it to prepare for their upcoming exams? So best features are the previous year question papers and basically custom module schema. इनका यूज करके प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को नोट से रिवाइज करना है, और जीटी एनालिसिस बेस्ट फीचर है, इनसे बहुत हेल्प हुई है। Great. How did you deal with your stress, Dr. Sagar, close to the exam? I'm sure the adrenaline level must be very high. You must be quite stressed at that time. How did you deal with it? Sir, basically music was my stress buster, and I used to listen Gurbani as I'm a Punjabi to deal with my stress. That helped you go through that and handle that particular stress in the last few days of the exam. Yes, sir. Great. Dr. Sagar, the entire fraternity of medical student is looking up to you. You have such a fantastic achievement here, right? You've cracked this, one of the most dreaded exam in your very first attempt by using a particular, platform like Marrow in a most effective, most efficient manner by focusing on your mistakes. Tell me, if all these students who are going to start their preparation now, right, for the next exam, right, the upcoming exam, what advice would you want to give them when they start their journey of preparation? सर बेसिकली नोट्स को कंसाइज करना है, और जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है बस वही करने हैं, और मतलब कि जीटी में कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इम्प्रूव करने का सोचना है कैसे करना है। क्योंकि जो जीटी की रैंक्स है वो मेन एग्जाम की रैंक से बिल्कुल मतलब कि डिफरेंट होती है, उसका कुछ नहीं है, बस हमें इम्प्रूव करना है ताकि मेन एग्जाम में अच्छी रैंक आए। और मतलब कि नोट्स को रिवीजन बेसिकली 3 से 4 रिवीजन तो मस्ट है, और नोट्स को ऐसे कंसाइज करना है कि लास्ट के 7 डेज में पूरी रिवीजन हो पाए 19 सब्जेक्ट्स की।
How did you plan your revision, Dr. Sagar? कुछ सब्जेक्ट्स जो आपने एग्जाम के बिल्कुल नजदीक में, एग्जाम के बिल्कुल क्लोज रिवाइज किए, कुछ सब्जेक्ट्स पहले रिवाइज किए, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आपने कैसे इंप्लीमेंट किया? जो मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे थे, जैसे कि मेडिसिन और ओबीजी, इनको मैंने पहले रिवाइज किया था, फार्मा। और जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे, लाइक माइक्रो, एनाटमी, एफएमटी, इनको मैंने लास्ट में रिवाइज किया था, सर्जरी। ताकि मतलब कि जो वॉलेटाइल है उनको भी लास्ट में रखा था, ताकि जो फैक्ट सारे मतलब कि मेमोरी में रहे। What about image based questions? जब आप when you used to solve question banks or give these tests and read those explanations, were you comfortable with the images that you had seen? Could you crack all these image based questions in your exam very readily, very easily based on that? Yes, sir. Some images were directly from the app for some questions. Is it? I'm sure they were very similar to what they were. These were classic images, and once you get used to them, your brain basically works like a wonder. You can readily go back and fetch the correct diagnosis. Dr. Sagar, it was a pleasure talking to you. Friends, if you have listened to this short and crisp interview, what you would realize how efficiently, how effectively Dr. Sagar has used Marrow as a platform. He has solved these question banks, took up these grand tests. Something that he has said repeatedly in this session is that grand tests are a part of your journey and not the ultimate destination, right? The grand test basically is a tool so that you realize what your weaknesses are and you work on those particular weaknesses and get better day in and day out as you approach the exam. He has told us how it is a good strategy to focus on the previous year questions, use your bookmarks, create your custom modules, go through your tests, focus on your weaknesses, and that is how you get better, and that is how you get a rank 10 in your NEET PG in the very first attempt, right? Heartiest congratulations, Dr. Sagar. Thank you, I am sir. sure Thank कि you, sir. students आपके in experiences say from your strategy, students can learn from it, student can use the question banks and tests in a more effective manner. Towards the conclusion of this interview, just a few motivating words for our students, right, who are looking at their upcoming exam. सर बेसिकली जस्ट अपना जैसे प्रिपरेशन चल रही है, कभी भी उसको कम नहीं समझना कि कम चल रही है, दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करना, बस अपने आप से बेटर करते रहना है। और कभी भी लो लगे तो कोई नहीं, अपने पेरेंट्स से बात करे, अपने फ्रेंड्स से बात करे, टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, उनसे बात करे बस। क्योंकि लो लगना तो नॉर्मल है, अगर तुम्हें लो लग रहा है तो मतलब अच्छी प्रिपरेशन है, कोई नहीं। कभी अच्छे दिन भी आएंगे, कभी बुरे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन में तो सब पढ़ते हैं, पर बुरे दिन में जो पढ़ रहा है वही मतलब की रैंक लाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये in this बस all कंसिस्टेंसी strategy रखनी है। related, yes, tell me, Dr. Sagar, tell me, complete that. मतलब कि कंसिस्टेंसी रखनी है, कभी लो लगेगा तब भी थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, चाहे 1 घंटा पढ़ लो, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि इंटर्नशिप में मानता हूँ टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कुछ हमारी तो वैसे भी इंटर्नशिप मतलब कि फर्स्ट बीएसएमसी और लास्ट में आके ओबीजी हुई है, तो उस वजह से तो बिल्कुल मतलब कि हेक्टिक हो रही थी। तो इस वजह से टाइम नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी तो रखनी है। Dr. Sagar, I forgot to ask you, what branch are you planning to take up for your post-graduation? Sir, I haven't decided between the radiology and the medicine. Great. So if you ask me, I'll give you a very strong push for radiology, but इसके बारे में और कभी और डिटेल में बात करेंगे. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sagar. Friends, I hope you can learn from Dr. Sagar how he has used his time effectively to get such a great rank. Thank you, Dr. Sagar. It was indeed a pleasure talking to you. Congratulations and enjoy the glory of your success. See you on the other side. Thank you, sir.